Artscrafts hereby presents International Women's Day Art Competition. While any day makes for a great opportunity to celebrate the women in your life, International Women's Day gives you one more reason to do exactly that. International Women's Day is celebrated on 8th March and is a global holiday that recognizes women's incredible achievements, raises awareness, and encourages others to advocate for gender equality. It is also a focal point in the women's rights movement, bringing attention to issues such as gender equality, reproductive rights, and violence and abuse against women. We at Artscraft respect the women and their contribution to the society and daily lives. And to celebrate this day, we are organizing a art competition on the theme womanhood. Feminism isn't about making strong because women are already strong. It's about changing the way the world perceives that strength. Women are real architects of the society. Before we move on to the competition details, let me tell you more something about us. Artscraft focuses on promoting exclusive, innovative, and idiosyncratic artistic talents from all around the world. Our mission is to bring forth contemporary art skills that anyone can connect to at a basic level. We also provide a platform for a wide range of audience as well as artists to explore the different cultures that people all around the globe celebrate. Our belief is to unveil the unknown artists and showcase their work by releasing high quality and limited edition art forms. So all are welcome. So with us today, some poetess from India, some artists from UAE, some artists from India. So many we have with us Sunita Agarwal. She is a artist. Veena Devgiri, Saraswati Sharma. Saraswati Sharma is also from India and she is an extremely talented artist. She doesn't have the hands, but she's doing the paintings with her legs. Always. So you all are the inspiration to the society. You all are welcome. Someone excellence in the art field, someone excellence in the other field, someone in the poetess. So everyone has his own identity. So all are welcome. First of all, I welcome you to celebrate the womanhood. That's on the eve of the International Women's Day. So we all are here to celebrate you. It means that as a woman, without you, because as a man, woman is part of the man. So it means man is from the woman. World of man is a woman. So in that way, without you, we even cannot exist. Have you ever heard that a single father, single mother? No, you have never heard that. Single mother, single woman. So it means they can handle everything independently. They don't need sometimes. If they have no choice, but they can do anything. Like long back, someone has told me that you write something on the mother. Then I read wrong back. What to write on the mother? She has written me. So what to write on the mother? So in that way, because you are the inspiration, you are the people, you are in the part of the society that handles that can handle everything. So here we will talk about the challenges. We will talk about the things which you understand on day-to-day life. How the society can be developed. Arts also, because we are platform of the arts and craft. So definitely on the arts, but whatever the specialization you have. So today we have with us from the starting just on the screen what I read: Sumana Malakar, then Ali, Sonia Sethi, Clarices from the Philippines, Anita Singhania from the Gorakhpur, Parishagar from Dubai, Ashutosh Garg. Ashutosh Garg is the deputy director in the railway. He's a good writer in the mythology. Then Soumya Rastogi, then CA Priyanka Birla. CA Priyanka is a chartered accountant and active management committee member of the Abu Dhabi chapter. She is doing the job. She is doing the member CI Institute's management and homework and everything. Rekha Gupta ji is a poetess from India. Sumitra Agarwal is a poetess and she was working with other agencies and excellent artist. Chetan Anand ji is a poet and he's from the Delhi Ghaziabad. Sunita Agarwal ji, I know since last 30 years approximately. She's an excellent artist. Veena Devgiri ji,
Saraswati Sharma, as I told you, she is excellent example of the courage, because as I told you, she is born without hand, and whenever you see her arts, she is extremely talented. When you see the work, how she is doing, excellent artist she is. Shobha Iyer ji, Shomya, Taru Agarwal. Taru is a writer, Taru is a poetess, and Taru is a PR agency, working in a PR agency. Taru I know since last many years, because we are doing the MBA in long back. So much everyone is excellence in their field. So all are welcome here. So thank you very much for joining the platform of arts and craft. Thank you very much. So you all are welcome to discuss each other. So yes, Chetananji, because just to start with, because you have the experience and you are writing on the women, so most welcome to tell something about the women and about the things which you feel on the day-to-day life. बहुत बहुत आभार अनिल जी, मैं सभी को नमस्कार करता हूं और आपने मुझे इस कार्यक्रम में शामिल किया। और मुझे लगता है कि महिला से बड़ा कोई ऐसा, कुदरत ने कोई ऐसी करिश्मा नहीं बनाया जो जिसकी तुलना की जा सके। महिलाएं हमेशा पूजनीय रही हैं, हर काल में महिला पूजी गई हैं और महिलाओं के बिना पुरुष का भी अस्तित्व नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये विदेशों में मनाया जाता है और धीरे धीरे हमारे भारत में भी आ गया है, लेकिन हमारे यहाँ तो रोजाना महिला की पूजा होती है। सुबह उठते ही हम अपनी माँ के पांव छूते हैं, वो भी नारी की प्रतीक है। और हर बार सुबह पूजा करते हैं तो वो लक्ष्मी की पूजा करते हैं, माँ शारदा की पूजा करते हैं। हम लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, देवियों की राधा की पूजा करते हैं, सीता की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ तो रोजाना हमारे मंदिर में, हमारे हृदय में नारी का स्थान सर्वोच्च रहा है। मैं जब छोटा था मुझे याद आता है, मेरी माँ अपने साथ कार्तिक महीने में मंदिर में ले जाया करती थी सुबह 4 बजे नहलाकर। सुबह सुबह उंगली पकड़ के मैं उनके साथ चला जाता था। कथा होती थी, कथा में बैठता था, माँ जाती कहती थी जितनी ये महिलाएं बैठी हैं सभी के पांव छू। मैं सभी के पांव छूता था। एक नियम था रोजाना जाना और सभी के पांव छूना। उन महिलाओं में छोटे मेरी उम्र की भी लड़कियां भी आ जाती थी, क्योंकि मेरा चेहरा ऊपर नहीं होता था। लेकिन हमारी माँ ने ये सिखाया कि महिलाओं की पूजा करनी चाहिए और महिलाओं का सम्मान हमेशा करना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के बिना पुरुषों का अस्तित्व नहीं होता। ये मेरी माँ ने बचपन से संस्कार दिए। अब मैं बड़ा हुआ, अब थोड़ा समझ आती है कि मेरी माँ क्यों समझाया करती थी कि सब महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। मनुस्मृति में भी कहा गया है कि क्या यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। तो वास्तव में वो स्थान बड़ा पवित्र हो जाता है जहां नारी का सम्मान होता है, नारी की पूजा की जाती है। नारी किसी भी रूप में रही है, उसने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। अंतरराष्ट्रीय पटल पर नारी ने अपनी पहचान बनाई है, अपने आप को साबित किया है। नारी एक ऐसा वृक्ष है, ऐसा पौधा है कि उसे कहीं भी लगा दो, चाहे बंजर में लगा दो, चाहे पहाड़ पे लगा दो, चाहे मिट्टी में लगा दो, चाहे कहीं भी लगा दीजिए, वो हमेशा वहां फलता फूलता है। और वो स्वयं ही फलता फूलता नहीं, बल्कि दूसरों को भी फलने फूलने का मौका देता है, दूसरों को भी सिंचन का मौका देता है। तो ऐसी नारी जो अगर एक बार पढ़ती है तो 2 परिवारों को पढ़ाती है। कहते हैं कि नारी को, लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक नारी 2 परिवारों का उद्धार करती है। जिसके भीतर परोपकार की भावना हो, जिसके भीतर ममता हो, जिसके भीतर विनम्रता हो, जिसके भीतर सहनशीलता हो, जिसके भीतर सबको जोड़ने की, संयोजित करने की क्षमता हो, और जिसके भीतर गजब की काउंसलिंग करने की का एक हुनर भगवान ने दिया हो, ऐसा विरला प्राणी केवल नारी हो सकती है। नारी के अलावा पुरुष को कभी भी वो मकाम हासिल नहीं जो नारी को हासिल हुआ है। नारी हर क्षेत्र में आगे है, केवल उसको अवसर मिलना चाहिए। अगर उसको अवसर मिलता है तो नारी निश्चित रूप से एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकती है। कई उदाहरण हमारे सामने हैं, जिनमें देवी अहिल्याबाई होलकर का हम नाम ले सकते हैं, मदर टेरेसा का नाम ले सकते हैं, इला भट्ट का नाम ले सकते हैं, महादेवी वर्मा का नाम ले सकते हैं, राजकुमारी अमृत कौर का नाम ले सकते हैं, करुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, कस्तूरबा गांधी। ये ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने, कस्तूरबा गांधी, जिन्होंने अपने बलबूते नाम रोशन किया और एक इतिहास में अपना स्थान पाया। इंदिरा गांधी जैसी दृढ़ संकल्पी महिला को हम नहीं बुला सकते, जिसने हमारे देश को बहुत आगे तक ले जाने में एक अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो विश्व पटल पर आज किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, महिलाओं ने अपने आप को साबित किया है। महिला अगर पानी में भी तैर रही है तो आसमान में पायलट बनकर
हवाई जहाज भी उड़ा रही है। महिला आज सबसे आगे बढ़कर मल्टीनेशनल कंपनीज में की सीईओ भी बनी हुई हैं और अपनी भागीदारी वहां भी निभा रही हैं। महिला अगर घर की मजबूती के लिए अपना अहम योगदान चार दीवारी में रहकर भी दे रही है, तो खुले संसार में वो अपने पंख फैलाकर आज उड़ रही है और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि जहां नारी होती है वहां ईश्वर होते हैं, और जहां ईश्वर होते हैं वहां पूजा होती है, जहां पूजा होती है वहां भावना होती है, वहां आस्था होती है, जहां आस्था निवास करती है वो स्थान निश्चित रूप से तीर्थ बन जाता है। तो मैं अपनी ओर से नारी के इस पावन स्मरण को केवल यही कहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को हम जो मना रहे हैं, तो महिला को उस तरह से सम्मान भी दें। केवल एक दिन का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाकर ना रह जाएं, हम इसको तीर्थ का रूप दें और रोजाना स्त्री को सम्मान दें, उसके सशक्तिकरण की बात करें और उसको आगे ले जाने के लिए उसको उचित अवसर भी हम लोग प्रदान करें, राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित कर, अनिल जी ने खास विशेष तौर पे मुझे मौका दिया कि मैं इस अच्छे आयोजन का हिस्सा बना। मैं उनको आभार व्यक्त करता हूं और सभी को प्रणाम करता हूं। नमस्कार। Namaskar. So thank you, Chetan ji. Thanks for the coming. Continue with us. I know कि आपको कुछ अभी urgent, there are some urgent meeting you have to go there. So please stay with us, and whenever you have, because you have some other appointments earlier. So thank you very much for the coming. So now we have with Elizabeth Davis. She is one of the jury also. So yes, please. So you can just tell me something about yourself, and because it is judgment, it is not a judgment actually. We are just celebrating the womanhood, and it is a contest. That definitely is a contest. There is maybe the better, good, and bad, but all arts always excellent because it is made on the perspective of the artist. So how you are going to judge all these artists' works in the coming days? Ma'am, you are mute. Hello, I'm Elizabeth Davis. I'm an artist in Muscat, Oman. And I've got into the art scene very recently in the last 5 years, even though I've been painting from childhood. I'm basically a marine biologist who turned banker, who worked in an audit office, and now it's full-time painting. And honestly, like Mr. Anil said, I am not very, very fond of judging artwork because everybody's artwork is so very different. And there is something very appealing about each one's artwork. And mostly the artwork is done for oneself, for the joy it gives you in creating it. However, per se, there are certain rules regarding balance and contrast and color usage. And those are some things we can judge. And because there's a panel of artists, a jury, and online voting, I am sort of comfortable with it. At the end of the day, every person is an artist, and the art is to give joy to the person who does the art, and of course to the viewer. And about womanhood, I see a lot of women out here, and I see a few men, and they all seem to be praising the women, which is good. But I think we need much more than praises, and we have a long, long way to go. I just hope the society and even we as women can make the men and the children in our family understand the value of women. Okay, thank you. Thank you, Elizabeth Davis ji. And now we are with the Sunita Agarwal ji. Sunita Agarwal ji is from Noida, and she's an extremely talented artist. And she is doing on day-to-day job as something and on the arts works always. So yes, Sunita ji, please just tell me something about your arts, because as a jury also you are going to judge the artwork by the same which I'm going to tell you. So tell me something about yourself and the arts, how you are going to judge. Ma'am, you are mute. So you can hear me now? Yeah. So my name is Sunita Agarwal, and I'm born and brought up in Kolkata, so hub of art and culture. So it was magical for me to paint on canvas. Like, I was really intrigued by all the emotions and all the energy running in Kolkata. If you ever happen to visit Kolkata, you can feel that energy in
Kolkata. So about painting, I'm a visual artist and I've been painting for more than 30 years now, and painting since my early childhood, supported by my family and especially my husband, always there to support me. So, I mean, as a woman, we both complete each other. Like talking about art, like at present, because it's a Women's Day, we are celebrating Women's Day, and I am participating in National Gallery of Modern Art, New Delhi, a 4-day workshop, and we are painting portraits of unsung heroes, freedom fighters. And it was very interesting since we came to know about so many women who had contributed during freedom fighting. And when talking to other women artists who are from the NCR region and Delhi and from all over India, the same thing echoes, like that completeness, being a woman and getting the support and feeling very proud that the family is there, the family supports, and they are able to work and they are managing their household as well as they are managing their career. And I feel about painting is it's very difficult to judge an artist, because it's your perception. My perception is my reality. Your perception is your reality. So it's very difficult to judge an artist. But anyways, we do have to judge regarding the color combination and the texture and how the creativity has been used. So those will be the criteria. And I'm very proud of being a woman. I think women are like just like water, and they can fit in anywhere, whatever shape, whatever place, anything. They have the power to handle any situation, and they manage everything. So I'm very proud of being a woman, and all the best to all the contestants, and really looking forward to see the kind of creativity, international creativity. Anilji is going to introduce us so that we can judge them and learn also from them, not only judge. It will be a learning experience for me also. So that's it from me. So thank you, Sunita ji. Thanks a lot for joining us. And now we have another judge, Sumitra Agarwal ji. Sumitra ji is again, that's an excellent artist, and she is a poetess also. She always coming with some new poems on Hindi especially. So yes, Sumitra ji, please. सभी को मेरा नमस्ते। और ये जो प्रोग्राम है महिला दिवस का, इस महिला दिवस पर सभी बहादुर, जो तो बताने की बात नहीं है कि जो महिला की शक्ति है वो सिर्फ एक 8 मार्च के दिन के लिए कोई एक दिन जो मुकर्रर किया है, वो उसकी एक तरह से देखी जाए तो कोई उसमें कोई गिनती वाली बात नहीं है कि एक महिला का दिन है। और मैं अनिल जी का शुक्रिया अदा करती हूँ। आज मैं भी सुनीता के साथ में थी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में, जो चल रहा है 4 दिन का प्रोग्राम। तो आधा घंटा में पहले निकल के आई कि अनिल जी के जो प्रोग्राम में मुझे जूम मीटिंग ज्वाइन करना है। तो अभी मैं बस आपका जो जूम का वो आया है तब मैं पहुंची हूँ। तो अनिल जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, जो आपने ये जो आर्ट का जो जूरी का काम है, वो सुनीता के कहने के हिसाब से बिल्कुल सही है। उसमें आर्ट सभी अपनी तरफ से दी बेस्ट देते हैं, और जो भी आर्ट है वो उसकी वैल्यू उस आर्टिस्ट के नजरिए से हम देखेंगे तो सभी दी बेस्ट होते हैं। अपना अपना नजरिया है, अपने किस नजर से हम उसको देखते हैं। और रही बात महिला की शक्ति की, महिला हर रूप में पूजनीय है। वो जिस दिन से जन्म लेती है और वो जब नानी, दादी, परदादी, परनानी बन जाती है,
तब तक उसका एक एक पल की अहमियत उसकी अपनी जगह, सिर्फ वही उसे पूरी कर सकती है, उसकी जगह और कोई नहीं ले सकता। एक जो महिला है उसमें पुरुष की भी शक्ति समाहित है। ये बात है कि कई पुरुष भी हैं जो उसमें मातृत्व के हिसाब से है, जो बच्चों को पालना पोसना, उनकी नजर है किसी हर तरह से, जो एक ममता की बात जो है, ममता जहाँ है वो महिला का रूप मानी जाती है। कोई पुरुष भी इससे अपवाद नहीं है। तो मैं इस जो शक्ति का जो स्वरूप है महिला, उसको मैं बहुत प्रणाम करती हूँ। और जो अपना नया कॉन्टेस्ट है, इन सभी बच्चों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ महिला दिवस की, और सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। So thank you, Sumitra ji. Now we have with guest with Ashutosh Garg. Ashutosh Garg is a deputy director in the railway, and I just connected him since last 1 hour only, because his daughter is working in some contest, so that's why I connected with him. And he is excellent mythological writer. So just I requested him to be part of us for some time. So Ashutosh ji, just tell me something about because you are in mythology. So just tell something about how the mythology, how the woman has been praised, or how the woman has been taken care in the mythology field. नमस्कार अनिल जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आपको मेरी आवाज तो आ रही है? या आई होप यू कैन हियर मी। ओके, तो मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर ये शानदार कार्यक्रम आयोजित किया, और मुझे इतने अच्छे और बढ़िया कलाकारों से उनसे मिलने का, उनसे बात करने का मौका मिला, तो मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ आपको। आप सबसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। अपने बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसा कि आपने थोड़ा सा परिचय दे दिया मेरा, मैं रेल मंत्रालय में, भारत सरकार के रेल मंत्रालय में डिप्टी डायरेक्टर हूँ, और सरकारी सेवा के अलावा लिखना पढ़ना मेरा शौक है, और मेरा जो मेन एरिया है वो हिंदू मैथोलॉजी है, यानी पौराणिक साहित्य पर मैं काम करता हूँ। मेरी अब तक करीब 33 किताबें प्रकाशित हैं, और उनमें कुछ अनुवाद भी हैं, ट्रांसलेशंस भी मैं करता हूँ, अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश, दोनों ही मैं भाषाओं में काम करता हूँ। और मेरे अपने भी कुछ उपन्यास हैं, वो सभी ज्यादातर अगर मैं कहूँ तो हिंदू मैथोलॉजी पर, यानी पौराणिक पात्रों पर ही आधारित हैं। तो ये एक छोटा सा परिचय है, और किताबों की फहरिस्त तो बहुत लंबी है, उसके बारे में फिर कभी बात करूंगा। लेकिन अभी आज जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आपने मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ा है, तो शुरू में चेतन आनंद जी ने वैसे तो सारी बातें उन्होंने कवर कर दी हैं, ज्यादातर उन्होंने बातें कह दी हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि महिला के बिना, नारी के बिना पुरुष का क्या, पूरे संसार का, इस सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं है। और हम सब जानते हैं कि नारी ही इस सृष्टि का उद्गम है। तो इसलिए नारी को जिस भी रूप में पूजा जाए, जिस भी रूप में उसे याद किया जाए, जिस भी रूप में उससे हम मुखातिब हों, उससे संबोधित करें, वो हमारे लिए हमेशा पूजनीय है और रहनी भी चाहिए। क्योंकि अगर आप बचपन से शुरू करें, थोड़ा सा मैं किताबों से हटकर एक छोटा सा और संदर्भ आपको देना चाहता हूँ, तो ये कि जब बच्चा छोटा होता है, जन्म लेने के बाद, और माँ उसे दूध पिलाती है, तो वो अपने नन्हे नन्हे पैरों से पैर मारता है, माँ को लाते मारता है, लेकिन उसके बाद भी वो उसे दूध पिलाना नहीं छोड़ती। तो ये लात खाकर, पीड़ा सहकर, कष्ट सहकर भी भोजन देने की क्षमता अगर ऊपर वाले ने किसी को दी है, तो वो सिर्फ माँ को दी है। तो ये नारी की ही शक्ति है जो इस सृष्टि को जिसने कायम रखा है। तो जितनी भी उनकी पूजा की जाए, जितनी भी उनकी प्रशंसा की जाए, वो हमेशा कम पड़ती है। और चूंकि मैं पौराणिक संदर्भ में काम करता हूँ, तो थोड़ा सा आपको उसका भी उल्लेख कर देना चाहता हूँ। शुरू में चेतन जी ने भी मनुस्मृति का श्लोक बताया, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः। तो इसका सीधा सा आशय यही है कि जहाँ भी नारी की पूजा होती है, उसकी उपासना होती है, देवता वही निवास करते हैं। और ये भी सच है कि जहाँ नारी को सम्मान नहीं मिलता, उसकी इज्जत नहीं होती, वहां पर अच्छे मन से और सद्भावना से किए हुए जो कार्य हैं वो भी निष्फल हो जाते हैं। तो हमारे इस मंच पर भी आज कई स्त्रियां, कई नारियां हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और हम अगर उनको महत्व देते हैं तो हमारा ये प्रयास भी पूरी तरह से सुफल देगा, हमें अच्छा फल देगा।
ऐसी मैं कामना करता हूँ। जहाँ तक पौराणिक ग्रंथों की और पौराणिक संदर्भों की बात है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वेदों और उपनिषदों के अलावा पुराणों में नारी के अलग अलग रूप हमें देखने को मिलते हैं। कहीं पर आपको नारी की कुछ कुटिलताएं या उनके कुछ नेगेटिव कैरेक्टर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ज्यादातर जो चरित्र हैं, ज्यादातर जो पात्र हैं, वो अच्छे हैं और विश्व की कामना के से ही प्रेरित हैं। चाहे आप उसे चाहे सीता का रूप देखिए या अहिल्या का रूप देखिए, रामायण और महाभारत में नारी पात्रों की संख्या इतनी ज्यादा है कि अगर हम उन पर चर्चा करें तो ये पूरा दिन उसी पर हम निकाल सकते हैं। तो लेकिन एक और जरूरी बात है, वो ये कि नारी की जो व्यवस्था रही है इसमें, वेदों और उपनिषदों से अगर हम शुरू करते हैं, तो शुरू में ये बात देखी जाती थी कि उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था या उन्हें शायद पढ़ने लिखने का, आगे बढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन इस तरह की बातें कही जाती हैं। लेकिन अगर आप कुछ वेद पुराणों की अगर उन पर चर्चा करें और बात करें, तो आप ये पाएंगे कि ऐसी बात नहीं है। शुरू से ही बल्कि नारी को पूरी तरह से शिक्षा का अधिकार था। उन्हें ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मवादिनी के नाम से संबोधित किया जाता था। और यहाँ तक कि उपनिषदों में गार्गी और मैत्रेयी जैसी स्त्रियों का भी वर्णन मिलता है। उनके नाम पर दिल्ली में कॉलेजेस भी हैं और वो बहुत ही श्रेष्ठ और उच्च कोटि की आचार्य रही हैं। उन्होंने सिर्फ पढ़ाई की ही नहीं बल्कि पढ़ाई करवाई भी है, लोगों को सिखाया है और गुरु का काम किया भी है। तो उसके अलावा जो और दूसरे और नारी पात्र हैं, आप उनसे परिचित हैं। मैंने द्रौपदी और सीता पर लिखी हुई 2 बहुत चर्चित किताबों का भी अनुवाद किया और उन्हें भी आप कभी मौका मिले तो देख सकते हैं। उसके अलावा अगर हिंदी साहित्य की बात करें तो मुंशी प्रेमचंद का बहुत ही एक चर्चित उपन्यास है गोदान। गोदान में एक पंक्ति आती है, वहां पर ये लिखा है कि स्त्री के कुछ स्त्री सुलभ गुण होते हैं जो केवल नारी में पाए जाते हैं, जैसे ममता, विनम्रता, सद्भाव, सहनशीलता, आदर, सत्कार। तो ये चीजें प्राय, ये इस तरह के गुण प्राय जो है पुरुषों में देखने को कम मिलते हैं। तो इसलिए गोदान में एक उदाहरण ये मिलता है कि जिस पुरुष में स्त्री के गुण आ जाते हैं, यानी कि ममता और सहिष्णुता जैसे गुण अगर किसी पुरुष में आ जाते हैं तो वो महात्मा हो जाता है। तो ये इस बात को सिद्ध करता है, साबित करता है कि स्त्री सुलभ गुण बहुत जरूरी है जीवन में। अगर उन्नति करनी है, अगर जीवन को समृद्ध और संपन्न बनाना है, तो नारी को ही नहीं, नारी के गुणों को भी पुरुष को अपने भीतर आत्मसात करने की कोशिश करनी चाहिए। और मुझे बहुत खुशी है कि इस बार, इस साल 2022 का जो संयुक्त राष्ट्र का, यूनाइटेड नेशंस का भी जो थीम है वो जेंडर इक्वालिटी पर है। जेंडर इक्वालिटी एक बड़ा विषय है। लैंगिक समानता यानी स्त्री और पुरुषों को बराबरी का अधिकार। हालांकि आज अगर आप देखेंगे तो हर क्षेत्र में आपको नारी पुरुषों वो सारे काम करती हुई मिलेगी जो पुरुष करते थे या करते हैं। चाहे वो, जैसा कि अभी और भी एक वक्ता ने कहा कि चाहे वो पानी में नाव चलाने की बात हो या आसमान में हवाई जहाज उड़ाने की बात हो या राजनीति में उतरने की बात हो या किसी भी और क्षेत्र की अगर आप बात करें, तो आपको वहां पर नारी मौजूद मिलेगी और बहुत अच्छे और बढ़िया काम किए जा रहे हैं। तो ये समानता का अधिकार जो नारी को मिला है, ये इसी तरह कायम रहे और उनका सशक्तिकरण और उनका एम्पावरमेंट इस तरह समाज में उसकी जरूरत है। क्योंकि अगर हम अपने भविष्य को उन्नत बनाना चाहते हैं, संपन्न और समृद्ध बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आज यानी वर्तमान सशक्त और मजबूत होना बहुत जरूरी है और उसके लिए महिलाओं की भागीदारी भी बहुत जरूरी है। तो मैं ऐसी कामना करता हूँ इस उपलक्ष्य पर, इस मौके पर कि हमें नारी का सम्मान और नारी के लिए जो समाज में स्थान है वो इसी तरह बना रहेगा, बल्कि और उन्हें मजबूती से ये जगह मिलेगी। मैं इस कामना के साथ आप सबको इस मंच से अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस के मौके पर बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस मंच पर जोड़ा और मुझे सुना, मुझे थोड़ी देर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं अनिल जी आपका और आपकी संस्था का बहुत बहुत आभारी हूँ। शुक्रिया। Thank you Ashutosh ji. Now with us with Rekha Gupta ji. Rekha Gupta ji is a poetess and artist. She is from Mumbai.
And Rekha Gupta is always talking to me on daily basis, and she's always praising what the womanhood is all about. So Rekha Gupta ji, please tell something about the members. You are on the mute. आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। ये तो आप सबने देख ही लिया होगा कि अनिल केजरीवाल जी हैं, समाज के लिए बहुत कार्य करते हैं, बहुत एक्टिव हैं, और जब भी वो चाहते हैं हम हमेशा हाजिर हैं। जब भी वो बुलाएंगे हम हमेशा आपके साथ तैयार खड़े हैं। आज नारी शक्ति के बारे में मेरे को कहने का मौका मिला है। तो नारी के उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग की बात हम सबने की, पौराणिक कथाओं की बात भी की है, लेकिन एक वर्ग आज भी ऐसा है जिसको शायद हम अभी थोड़ा सा अछूता रह गया है, क्योंकि हम कितना भी पढ़ गए ये बिल्कुल सच है कि नारी ने बहुत प्रगति की है। वो शून्य से अगर शिखर की तरफ जा रही है तो सिर्फ अपने दम से जा रही है। उसने खुद ही अपना रास्ता तय किया है, भले ही उसमें कितने भी व्यवधान आए हों या कितनी भी कठिनाई आई हो, उसने सबको सहा है और खुद अपने बल पर आगे बढ़ रही है। उसमें ममता है, कोमलता है, नम्रता, सहनशीलता, निर्मलता, सहजता, सहजता, ये सब चीजें हैं। ये नारी की कमजोरी नहीं है, ये नारी की ताकत है। इसी ताकत को साथ लेकर उसने अपनी बुद्धिमत्ता से समाज में अपनी जगह बनाई है, आज भी और पहले भी और आगे भी बनाती रहेगी। वो शौर्य के परिचायक हैं, उसके ये गुण। संसार में अपना स्थान बनाया है उसने, और जितना भी परिवर्तन हुआ है यह सब उसने स्वयं किया है। लेकिन आज भी ये जरूरी बात है कि हमारे यहाँ, हम खुद, आप सब अपने घरों में भी देखते होंगे कि एक वर्ग ऐसा है जो आज भी बहुत पीड़ित है, और उसको अभी भी वो कहीं अंधेरों में खोया हुआ है। और उनके लिए मैंने 4 पंक्तियां लिखी हैं, क्योंकि बाकी सबका तो हम सब जानते ही हैं कि वो कितना ज्यादा कितने सब ऊपर शिखर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो अभी हमारे नीचे रह गए उनके लिए लिखा है कि ए नारी तुम क्यों रोती हो, ए नारी तुम क्यों रोती हो, रो रो कर तुम क्यों कहती हो कि इस बेरंग उजड़ी सी दुनिया में नहीं है अपना गुजारा, इस बेरंग उजड़ी सी दुनिया में नहीं है अपना गुजारा, कहाँ तक ढोए अभिशप्त जिंदगी जब जीवन ही ना रहा हमारा। नहीं, ऐसा नहीं कहना है। सुनो, क्यों तिल तिल कर तुम जल रही, क्यों तिल तिल कर तुम जल रही, क्यों मर मर कर तुम जी रही। जागो जागो नवचेतना तुम्हें बुला रही, जागो नवचेतना तुम्हें जगा रही, उठो कर्म भूमि तुम्हें बुला रही। इस वक्त में ना तो सोना है, इस वक्त को ना तो खोना है, अपने हाथों इतिहास रचाना है, दुर्गा लक्ष्मी फिर से बन जाना है। ना शासन का अधिकार पुरुष को, जो अभी तक होता आया है काफी जगहों पे, तो ना शासन का अधिकार पुरुष को, ना शोषण का नाम है नारी। युगों युगों तक पुरुष ने सींचा, युग परिवर्तन का नाम है नारी, युग परिवर्तन का नाम है नारी। आप सबने इतने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मन में एक ये लेडीज के लिए कसक थी, तो जो मैंने अपनी इन पंक्तियों में आपके सामने प्रस्तुत की है। धन्यवाद, नमस्कार। Thank you Rekha ji. Now CA Priyanka Birla. CA Priyanka is a chartered accountant and active member of the ICI Abu Dhabi chapter and managing committee member. Always you can find, if any event in Abu Dhabi, she is always behind that. Always be there for any small events, anything. So Priyanka ji, just tell something, because you are in the mostly profession of the men, because CA is mostly 95%, I think it's the men only. So tell me something about you and the profession. Thank you, Anilji, for giving me this opportunity, and thank you for such a wonderful introduction about me. I would say, being today here with all of the ladies on this panel, I think they're all artists. I am not artist in their line of nature, but I am an artist when it comes to the numbers, as I'm a chartered accountant. And it is really great to be amongst all you creative geniuses, because art is very difficult. It's very difficult to interpret what you want to say with colors,
canvases and different stuff. So I have high regards for all the artists around the world. And I would like to take this opportunity to express my sincere appreciation to Anilji, who's been doing such an amazing work, making sure that all the artists, whether it is national or international, are getting a visibility on both national as well as international fronts. So Anilji, kudos to you. And you're doing all of this work out of your passion only. So keep doing it and keep all of us inspired as well. Coming to the question that you just asked me with regards to how do I feel, being into a profession which is highly dominated by all the men. I would just say one thing, that we women, for us, nothing is impossible as long as we are just ready to take that extra step and just, kind of go to that extra mile for what we want in our life. Just giving you a brief, I also hail from India, a very small district in India in Madhya Pradesh called Meemach. And I've just did my schooling, did my CA from Indore, did a certification yoga from Haridwar, did my job in Bombay. So I have gone through different cities, and I have learned many experiences around the world, and all of them have helped me to reach where I am currently today. All of these experiences have taught me one thing, that once the hard work and the dedication, there is no substitute for it. And if you have a strong determination of what you want in your life, it is not at all something that is impossible. I am also privileged to be featured as one of the top 13 women achiever in UAE, and I was telecasted on a local media channel, Before You Plus as well, where my journey was being showcased to other women in the region. And it just only, that series only said one important thing is, in spite of you being a mother, in spite of you being a wife, there is still a separate life that you can lead as long as you have the support of your family and you have a strong determination to achieve what you want in your life. So I just want to say a few things, that, feminism isn't about making women strong. We women are already strong. It's just changing the way the world perceives our strength. And there is no limit to what we as a women can accomplish. We just need to reshape our own perception of how we view ourselves. And we have to step up as a woman and take the lead. And every woman's success should be an inspiration to another, because we are only strong when we cheer for each other on. So on the eve of International Women's Day, I wish everyone on this forum and to all the women in the world a very, very happy International Women's Day. And let's continue to rise, shine, and grow together. Thank you so much, Anilji. Thank you. Thank you very much, Priyanka. Now, because we have talked about some other than the arts, and it is an art platform. So let's start with some artists also. So with us, we just Clarisse Bautista. I may be the wrong in this pronunciation, or clearly, so sorry for that. And she is from the Philippines, and she's an excellent artist in the watercolor. So just tell something about your arts and something about you. Hi everyone. So yes, you pronounced it right. It's Clarisse Bautista. I'm having a vacation here in the Philippines, but I'm a resident of UAE. So just to give a brief on, let's say, if we're gonna talk about womanhood, I'm a single parent. So when it comes to power or just being a mom to my daughter is requires a lot of courage and determination. So probably you can see for this competition that I would probably showcase the strength of women. With my arts, I am an active member of Urban Sketchers Dubai. With the faces over here, hi to Pari. We've seen each other a lot of times. So I do a lot of urban sketching or travel sketching, where I sit down and then just use my watercolor and pen to sketch the location and capture what's happening around. I also do customization works, which is acrylic on leather goods, mostly like customization of sneakers, leather bags. So that's what I'm working on right now. Like the bread and butter of my arts right now. I also accept commissioned artworks, acrylic on canvas, illustration works, digital arts. So
those are what keeps me moving. It's a very hard decision when I jumped into the arts field like full time, because I just started arts full time back in January of 2021. So over a year. And it's a struggle, but we are, women, and we know that we can do it. That's all I can share, sir. So thank you, Glaisa, and it's a pleasant to see you first time face to face. And now with us, the Taru Agarwal is we were doing in 2008. We were doing management course from the IIM Calcutta. So see, I know Taru since last 12-13 years. So tell me something about yourself, Taru. Thank you, Anil. Can you hear me? Yeah. Okay. Anil, first, I would like to congratulate you for starting this amazing initiative. We need this today, where a platform where the artists can get to speak up about their work and artists can be introduced to the rest of the world. So I would like to congratulate you and your family first for starting this initiative. Second, I would say on this Women's Day, first, I would like to salute all the women today who for the last 2 years have been doing everything at home. They have been working full time. They have been educating their children through online classes. They have been looking after the entire family, which has been a very difficult task. So I would like to salute all the women who have had a very tough time, and still a lot of them are still going through. About myself, so I was a trained software. I started as a trained software engineer way back I would say 25, 30 years back. In the education, when computers were not even introduced in India, I started by doing software courses, and then I graduated from Jawaharlal Nehru University. Later, you mentioned, Anil, I did a management course from IIM Calcutta along with you, where you were there. So that was my journey. After doing software engineering, I actually joined technical journalism. So I did not remain a software engineer, but I became a technical journalist, and I have been in the technology, media, and PR field all through. I write extensively along with my creative writings. I still write extensively on technology. So that's another area. As for my writing, I would say I started writing poetry and short stories from my childhood. Whenever I had to communicate anything to anybody on paper, it would mostly come out in the form of a poetry. So that's how my journey started. I have published 2 books. One is a book of poetry called Life's Not All That Unfair. And one is a book of short stories called Lady in the Chair and Other Short Stories. A lot of my other collection of work is available on my website, which is taruagarwal.com. So writing continues to happen. I write both in Hindi and English. I write in the subjects which are current. I write on Hindu mythology. I've written a lot also on that. So there's a lot. So all that happens. And when Anil came up with saying that he would like me to say something in poetry on the International Women's Day, I was very excited. And what came out, I would say, was the work of 2-3 hours. In 2-3 hours, I wrote down a new poem, which came from my experience of the women I see all around. So I would say, in my experience, I've seen that there are 2 kinds of women which I have seen in India. One who would give in very easily to everybody, and women who have a tough time because everybody takes them for granted, including their families, people outside, their children, their parents, and everybody. And another set of women who are very strong, women who actually are the decision maker in the family. And that's a huge number. I would say it's almost 50%. These women you cannot make out, but the women are actually running the show behind the curtain, and that is very common there. Like Rekha ji also said, there's the other set of women which have not yet managed to play on their strength.
that is also a huge number, I would say. And you can find them in all stratas, all income levels. It's not that only in a low income level or middle class or the upper class, it's everywhere. So you will find women who are not able to speak up everywhere, and you will find very strong women even in a very small household and even in a very rich household. It's all around. So the power of women is strong. My only thing to women is to say that you're born a very strong person. What you can do, a lot of times I would say men cannot achieve, because men, I find, always need support of a woman. They become complete when they need a support of a woman, whereas a woman on her own can run a house, But can here I'll say one thing. Even no yes. jokes without the woman is complete. Even the man cracks joke on the woman, that is also not complete without the woman. Oh So yes. you people are required. Oh yes, you're absolutely right. Most of the jokes that Yes. men crack are on women, so that's also true. So I would say that women just have to recognize their strength, and they don't have to be afraid of anything. They have to speak up. They don't have to be afraid. They have to have the courage to go out, because if you step out, there'll be everybody out to support you. But unless you don't help yourself, nobody else will have the courage to help you today. So India has a very strong history of women who have done very brave things, and it continues. There is no end to that. I would say today that I am privileged to be born as a woman, and I would say again, salute to all women for having been born as women, for your strength. Just go out, be there. The kind of love that a woman can give, it cannot come from anybody else. There is a joke which used to go around that a father says, when I come into the house and my children come, there's only one question they all ask me. The question is, where is mom? So that's what, and truly we've seen this in most households. Children come and the whole household revolves around the woman of the house. So that's the strength of a woman. On this Women's Day, I would say strength to all of you for all your life, for 365, 24/7. It's not just one day when we are being celebrated. Womanhood is to be celebrated every day. So thank you, Anil, for giving me access to this platform and for inviting me here today. Thank you. And thank you to all my fellow artists and everybody who's there here present today. Thank you. Thank you, Taru. Now we have the Dipti. Dipti Singh is a yoga trainer, and she is doing yoga since many years, and she's excellent. So I just thought, let's call her, so that because of the day-to-day works and all, she can tell something, some yoga, something like that. So you will feel comfortable whenever you are tired, you are something, you need some break. So just some technique, Dipti, just can you tell some techniques so that all the ladies and men, everything we can feel relieved? सभी को मेरा प्रणाम. मैं दीप्ति सिंह. I am a yoga trainer. Okay. First of all, thank you, Anil sir, for inviting me on this platform. और जैसा कि हम सब यहाँ पे गैदर्ड हुए हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करने के लिए, एंड आई एज अ वुमेन आई एम वेरी ओवरवेल्ड. ओके. एंड बहुत सारे लोग, आप सब मेरे से बहुत ही ज्यादा सीनियर और एक्सपीरियंस लोग हैं. मैंने सबको सुना और काफी चीजें अच्छी भी लगी, बट आई जस्ट वांट टू से वन थिंग ऑन दिस ओकेजन, दैट women's day should not be celebrated only one day. All day, all 335 days are for women. Okay. And here, like as Taru ma'am said, that abhi women ko kafi zyada problem to manage house, and apart from house, those who are working, they have to manage house. Along with the house, they have to manage their office work as well. तो होता क्या है उसमें, women tired हो जाते हैं, या फिर as we are the backbone, we as human, we are the backbone of the family.
और हमें बहुत सारी चीजें एक साथ लेके चलनी पड़ती हैं। उसके लिए होना सबको हेल्दी चाहिए, बट वुमेन्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। तो उसके लिए देयर आर सर्टेन थिंग्स लाइक जो वुमेन घर भी संभाल रही है, बाहर भी संभाल रही है साइमल्टेनियसली, उनके लिए सर्टेन प्राणायाम हैं जो आप कर सकते हैं। इवन इफ यू आर इन योर ऑफिस एंड यू आर फीलिंग टायर्ड मेंटली, ओके, देयर आर सर्टेन प्राणायाम्स which you can do it even in you are sitting in your office on your chair. Okay, so I'll do something, I'll show you by doing. This is called Gyan Mudra. This is for the relaxation of the mind, okay, which you can do wherever you are traveling or whatever. This you can keep it. This you can keep it on your knee. All right. Close your eyes. Concentrate on your breathing and deep inhale, deep exhale. This is how you can feel relaxed. And to concentrate on your mind, sometimes we as women we get frustrated. Uske liye bhi anulom vilom you can do. This is Gyan Mudra. In one hand you can create Gyan Mudra, and in another hand you can create Vishnu Mudra. This is known as Vishnu Mudra. एक सर्कल होता है अनुलोम विलोम का. This is, you have to inhale from left nostril, exhale from right nostril, and then again inhale from right nostril and exhale from left nostril. This is one circle of Anulom Vilom, which you can do it and you will feel relaxed. Okay, make it clear. हमेशा left nostril से, because अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है और आपने राइट नॉस्ट्रल से ब्रीदिंग करी तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है. ओके, सो ऑलवेज डू इट विद लेफ्ट नॉस्ट्रल. ओके, एंड देन वन मोर प्राणायाम, दैट इज भ्रामरी. भ्रामरी से जो ध्वनि, जो साउंड निकलती है, वो आपके ब्रेन सेल्स को बिल्कुल रिलैक्स करती है, क्योंकि आपके ब्रेन सेल्स उसके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं एंड देन यू फील रिलैक्स्ड. Brahmani ka bhi, I must be knowing that you all are aware of all those things, but maybe proper techniques nahi pata hote kabhi kabhi, hai na. See, your index finger should be placed on your eye corner, middle finger at the top of your nose, third finger, that is ring finger, at the upper lips, and your little finger on your down lips. You have to close your eyes. Deep inhale, and then you have to close your eyes. You don't have to chant from your mouth. You have to chant from your throat. That is, so this is how, but you have to inhale, and when you will chant Om, your breathe will automatically exhale. You don't have to exhale. Please make it clear. You don't have to press your eyelashes. Okay, if you are pressing your eyelashes, this is not the proper technique of doing it. All right, so this is where I did it, and thank you so much, Anil sir, and everyone for listening me and for watching me patiently. Thank you so much. Thank you. Thank you, Dipti ji, for just giving some tips for the day-to-day healthy life. Because if you people are healthy, we will be healthy. Because you are very true. I think whenever I come to home, where is Madhu? So it is generally first question is, where is mom, or something like that only. So in that case, definitely you are the first. You people are the first ones to be sought out and to be think about that. So thank you very much. That's what I use this word, sir, that women are the backbone of the family. Definitely, yes. It is not on the books. It is we feel in day-to-day life. Yeah. That's what I said, that Women's Day should not be celebrated for one day only. It should be celebrated every day. All 35 days are for women, and this everybody should feel and realize and implement also that yes, women are the part of the family and the backbone of the family. Because at many places in many families, you must have seen that women are not being praised by their family members, and obviously they are not being supported by their family members to raise as much as they can. Actually, this is because I take it granted concept.
So we take it granted that this is their work. They have to do that. That is the reason only that they are not being appreciated on day-to-day life. So thank you very much, Dipti. Now, with us today, Dr. Raghavendra. Dr. Raghavendra is MBBS and MS. He is orthopedic doctor in Life Care Musaffa, Abu Dhabi. He is also one of the jury of this International Women's Day contest. So yes, Dr. Raghavendra, how do you feel as a jury of the arts contest, because it's not your field? So first of all, I want to wish every beautiful and incredible woman a happy Women's Day. And thanks to Mr. Anil Kejriwal sir for making me a jury, and really honored actually. And thank you very much, sir, actually, for that. My advice to all the women will be to take care of themselves, because they say the best gift what we can give to our near and dear ones is the healthy us, the healthy you. So what I feel that unlike men, the women manage roles even at home and even at the work. So they tend to work a lot harder than men. And sometimes in this, to strike this balance, sometimes what happens, they lose their, they tend to neglect their own health. So what I suggest is for them will be, the woman, every woman should have at least basic knowledge of most of the common diseases in their age groups. So the women are obviously biologically different than men, and they pregnancy, menstruation, and reproductive health care. Some will be the regular workout. Regular workout is very important, and like anything, like swimming, jogging, running, whatever they want, because regular workout makes our bones stronger, builds our muscle strength, and it decreases the rapid decrease in the bone mass, and in turn osteoporosis. So the next will be, even they are supposed to do regular health checkups once in a while, because there are something like for breast cancer, the mammography is there. They're supposed to get it done at least once in every 2 years. And for cervical cancer, there is something called as pap smear. It should be done at least once in 3 years, after 21 years, I'm telling you. And mammography is after 40 years. And minimum, like once in 1 year or 2 years, everybody should get their blood pressure, sugar, and cholesterol and lipid profile to be checked. And last, I want to tell you that they should be aware of their nutritional needs, because women tend to need a little bit more of calcium and iron, because during lactation, during pregnancy, definitely they need more calcium. The system need more calcium, and during every menstruation, they do lose some amount of iron. So either they can take those vitamin or mineral rich foods, or in case it's necessary, they may need to give supplements also. And that's it, sir. Now I request Saraswati. Saraswati, as I was telling about you, about her, that she is an extremely brilliant artist without their hands, because as you know, she don't have hands, and she doing such a wonderful artwork by leg, because she has participated in 2 or 3 events with us in the past also. And the last event, the present event, which is going on, the Sankat Mochan, she has sent an extremely excellent painting on Hanumanji. So Saraswati will tell you, because she is facing, she has fought 2 elections also. Though she has lost the election, but she fought 2 elections also. And she is working in the government office and doing the computer job with legs. Because and just Saraswati, just tell me something about yourself. Tell the people here. नमस्कार आप सभी को मेरी तरफ से जी। मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ जी। मेरा नाम सरस्वती शर्मा है। मेरा बचपन से पढ़ाई नेपालगंज से हुआ है। तो 11th के बाद में मैं इंडिया आ गई, राजस्थान सेटल हो गई। अब यहाँ आने के बाद मैंने 12th किया, ग्रेजुएशन AA में कंप्यूटर डिग्री ली, और मैं जॉब लगी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर। तो धीरे धीरे वहां से कमाई तो होती थी, लेकिन आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड, आई वॉज नॉट हैप्पी। माई पैशन वाज माई पेंटिंग्स एंड ड्राइंग्स, but in our district their paintings are not so encouraged. I didn't got any platform in paintings. One day I used to see
others on Facebook others story. On that I got one advertise. Then I contacted madam and I did my diploma in fine arts. Now I am doing professional artist in fine arts. And yes, thank you so much for Anil sir for giving me this opportunity to participate in this international platform to represent myself and my artworks in front of all the great leaders and artists also. Whatever result will come, I never bother. But reaction will there. Reaction will be there in loss and defeat both. So I don't mind whether I will win or not. Now I am participating in Sankat Mochan. I really enjoyed this competition and many things I am learning from all the great leaders from international, national also. Anisali is also guiding in every stage and for supporting me. Thank you for much. Now for 2 times I have been fought in excellence. No, I am I am teaching tuitions also in maths and English and anything others, whatever you know, Anissa, you want to know, you can ask me because I am what to say about me. Everything you have told about me before also. No, Saraswati, I just share your video also how you are working with your legs. And I shared the video in the local media also here in our group, YouTube, WhatsApp group also. So definitely you are encouraging all of us everywhere in the life. They are blaming. I do not have this one, not one, this one, because you don't have the hands. And even if you are always smiling, always happy, and always participating in any activity. So that's a great thing, Saraswati. Really salute to you and your encouragement, because you are doing all the good work for the society also. And for in coming in this Women's Day, I am invited to speak some things in stage in our district with collector. So on this coming Women's Day, I have to go there to speak some of my words. I have been honored by district collector also and many other persons also. I never say that I am intelligent. I have learned everything, but it is not the limitations of learning. So after in whole life we have to learn, go ahead. So please sir, try to guide me and encourage me further also. Thank you, Saraswati. Thank you for joining us. केजरीवाल जी, मैं सरस्वती के बारे में सॉरी बीच में बोल रही हूँ मैं, मेरे से रहा नहीं गया इस बच्ची के जो इसने सारी बातें बताई हैं। सर ने तो बताया ही था आपके बारे में, आपका वीडियो भी देखा बेटा हमने। तो सरस्वती की कहानी और सरस्वती का जो ये जज्बा और जुनून देखकर मेरे को ये लग रहा है कि सरस्वती के सिर्फ हाथ नहीं है, सिर्फ हाथ ही नहीं है बेटा, आपके पास तो इतना सब कुछ है जो हम लोगों के पास नहीं है। नहीं मैम, जैसे आप समझ रहे हो ना, सिर्फ आपके पास एक हाथ ही नहीं है और इतना सब कुछ है आपके पास। और आपके जज्बे को तो सलाम करती हूँ मैं। Actually, all the credit goes to my papa only. He only guided me to survive my life normally. अब कहते हैं मेरे पास वो नहीं है, क्या नहीं है सबके पास, क्या तो नहीं है? तरीके अपने अलग पास होते, सबके पास ही है। देखो कल के दिन आपके पापा मम्मी आपकी हिम्मत बने, आपका हौसला बने, क्योंकि आपको उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। अब वो आपको देखकर हम जैसे दूर बैठे लोग भी कह रहे हैं क्या नहीं है सरस्वती के पास, सब कुछ है इसके पास, तो वो है जो हम लोगों के पास नहीं है। आप एक प्रेरणा हो भाई समाज के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी प्रेरणा हो। आपके अंतर मन की जो शक्ति है ना, वो आपको कहाँ से देखिए आज कहाँ ले आई है। बिल्कुल बिल्कुल। आप जो है बहुत महान हो। आप अपने आप को किसी से भी कमतर नहीं मत सोचिए। नहीं, वो है ही नहीं, कमतर है ही नहीं, कमतर का तो कोई मतलब ही नहीं है। आप सबके लिए प्रेरणा हो। जी हाँ, मैं तो सरस्वती की सच में प्रेरणा है मेरी। मैं बहुत her name is also Saraswati, so she is on the art and everything, she is Saraswati only. सरस्वती, मैं वही कहूँ ना कि ये सरस्वती की जो है ये
इसके पास तो सिर्फ हाथ ही नहीं है और सब कुछ इतना है इसके पास, बहुत कुछ, बहुत बढ़िया। So thank you, Saraswati, for joining us. Now we have the Sonia. Sonia, yes, please. You are an artist from Abu Dhabi, Dubai. So tell me something about yourself. Yeah, hi. I actually I'm a teacher by profession, and this being an artist, I think it was within me since childhood. I liked to draw, I liked to color. But here in UAE, yes, definitely we are happy that we got the platform to exhibit our art and to continue with the passion, because we see a lot of people around, a lot of women around who are motivating each other, and and it is a really good feeling. What I feel is when a woman is pushing another woman to come in front and to shine in front of the world. I really feel that that is something we all need to achieve. That is selfless love amongst us, that I feel that it should be there everywhere. So I have been blessed with lovely people around, my friends who are beautiful women around, and they have somehow pushed me to get into this. Why not to go ahead and exhibit your skills and your talent? So I'm thankful to all those people, and definitely I feel that we should be be a power, give power to each other. We should appreciate more and more each other, so that we all can be make this world more happier place. This is what my feeling is. And being an artist, I feel that artist can be in any field. Like whatever beauty we feel in the world, we try to capture it. We try to bring that beauty in front of the world, and we try to make it immortal. Artist is someone who makes a picture which everyone can see, and it is there then. I mean, it is not dying picture. It will be there. It is there for years. So this idea has really captured me, that to become an artist, and I'm really happy to be on this platform. Happy to being part of all, and thank you for everything, I would say. Thank you, Sonia. Thank you. Now, Pari, I think Pari, you are there. Hello? Yeah, Pari. Yes, please. What you would like to hear from me? So whatever you want to say. It's open for him. Okay. All right. इतना सबने सब कुछ बोल दिया है तो मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं है. Happy International Women's Day to everyone. This is Pari. I was born and brought up in Mumbai to a Gujarati family, and जैसे मेरी शादी जैसे लगता है कि बचपन में हुई थी. So you know how the family tradition, everybody अभी शादी करके दुबई जाएगी तो दुबई की जिंदगी और से अलग सी हो जाती है. And I had a huge family over there and huge family over here. The transition of 50 years of mine in Dubai has really opened my mind. So it's emotionally, physically, and seeing so much of changes in the world. So as I said that कि मेरी बचपन में शादी हुई थी, so I was जैसे मैं यहाँ पे पली बड़ी. So it was like after 30 years, I stepped out from my house. I stepped out from my comfort zone. Everything is there. Beautiful children, a loving husband, everything is there. But you need to step out from your comfort zone and do something. You can't be just limited. So I learned many things, and the only thing was my strength was the art. So इसलिए मैं उसको बहुत निखारने चली थी, and I taught many students, many children. I'm a self-taught artist, so मेरी life ऐसी चली. As my father was an astrologer, so I learned numerology and wrote a book on numerology.
So that's how my, extending my comfort zone out of it, and dire, you start opening up with a lot of people. So in Dubai, you will see that in 20 years, the transition in UAE has happened so much. ये पहले ऐसे नहीं था जैसे अभी का प्लेटफॉर्म ऑनलाइन है, या पहले का जमाना किस तरह से था कि you had to find a market to sell your art or show your art. It was very different from now. So right now the opportunities are many. Right now the opportunities are open for everyone. Anybody can show their art through online, through website, or everything is open. So there is no limitation to anything, even in your talent or anything. Especially आपको जो बोलना है, जो आपकी समझदारी है, उससे आगे बढ़ना है. So I always wish all the women a happy International Day to everyone. And you should always step out from your comfort zone and see the world. When you just travel and see the world, you will see a lot of different things, and there are a lot of opportunities. And thanks to Anil Kejriwal, here comes the man who, with this big show for the International Women's Day, he's the only guy in this right now, the meeting. All the men's are out. So thank you, Anil Kejriwal, for this platform. And it's amazing to see women doing so much beautiful, especially the Saraswati, the way she has been painting and drawing. It inspires me. So anything is possible in this world. So women, salute you. Over to you. Thank you. Thank you, Pari. We are with Kusum Datta ji. Kusum Datta ji, are you there? Kusum ji? Okay. Till the time Kusum ji is coming back. Now, Poonam Chaturvedi ji, are you there? Poonam? Okay, fine. Now, in the meantime, with us is Anita Singhania. Anita Singhania is from the Gorakhpur. And she is a housewife. She is doing her own business and so many things. She is a mother-in-law of and she has 2 sons. So Anita, just share your experience about yourself and how your struggle is. You can tell anything in Hindi also, not a problem. नमस्कार सबको, मेरा धन्यवाद अनिल जी, आपने मुझे इस मंच पे बुलाया. मैं क्या बताऊं, ये तो बात सबने कही है कि वुमेन्स को एक किताब में या एक शब्दों में हम बांध नहीं सकते हैं. वो अनंत है, अथाह सागर है, ममता की मूरत है, ये सब बात सही है. और लेकिन औरतों के साथ में यदि पुरुष हमारा साथ न दे तो हम कुछ कर नहीं सकते, ये बात सही है. लेकिन फिर भी हमारे अंदर की जो शक्ति है वो हमें अपनी पहचान खुद दिलाती है, और हमें अपनी पहचान दिलाती है, और उस पहचान से ही हम आगे बढ़ सकते हैं. और समय परिस्थितियां सबको सब कुछ सिखाती है, ये बात सही है. और उससे ही मैंने भी बहुत कुछ सीखा. और मेरे बच्चे छोटे थे, मेरी मदर इन लॉ नहीं थी, मेरी शादी हो गई थी, और मैं तो यही सोच के आई थी कि एक ससुराल होता है, वहां जाना होता है, बच्चे होते हैं, उसी में रहना होता है. लेकिन जब अंदर की ताकत और हमारी समय और परिस्थितियां हमें साथ देने के लिए बोलती है तो हम खुद उस चीज को अपने आप ही, ये हमारी अच्छाई है, ये हमारी गॉड गिफ्टेड है कि हम अपनी शक्ति को पहचान लेते हैं और हम उससे आगे बढ़ना सीख जाते हैं. तो मैंने अपने बच्चों को पालते हुए अपनी खुद की शॉप खोली और मैंने टाइम मैनेजमेंट करना खुद ही सीखा. स्टार्टिंग में तो मुझे लगा कि नहीं, ये नहीं हो सकता है मेरे से, मैं कैसे करूंगी. मेरे फादर इन लॉ भी उस समय बीमार रहते थे. फिर भी मैंने ये देखा है कि यदि एक औरत कुछ करना चाहती है तो माँ दुर्गा उसका साथ देती है और वो अपनी शक्ति को पहचान लेती है. तो मैंने घर दुकान सब कुछ मैनेज किया. मेरी एक बड़ी फैमिली भी थी, मेरी सिस्टर लॉ वगैरह सब मुझे बहुत सपोर्ट करती थी. और मुझे इतनी खुशी होने लगी कि यार मैं तो ये तो थी नहीं, मैं कैसे ऐसी बन गई. और अपने आप ही सब कुछ सही से चलने लगा. बच्चों ने भी अच्छी पढ़ाई की, मेरे फैमिली ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया. और जैसे लगा कि वक्त को और मेरे अपने आप को एक पंख लग गए, मुझे अपनी पहचान मिल गई और लगा कितना इजी है. हम कितना घबरा जाते छोटी छोटी बातों पे,
लेकिन औरत की शक्ति उसे बहुत सपोर्ट करती है। और केजरीवाल जी ने मुझे इस मंच पे बुलाया, मैंने इतने लोगों को सुना, तो ये बात तो एकदम सही है कि हम किसी भी शब्दों में, किसी भी किताबों में नहीं औरतों को मान सकते, ना हम एक वुमेन्स डे मना करके उनका परिचय दे सकते। और मैं तो इतना बोल नहीं सकती हूँ, मुझे ज्यादा बोलना आता नहीं है, फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं इतने 6 वुमेन से मिली, सबको देखी, खास करके सस्ती से मिलकर मुझे लगा कि हम तो कुछ नहीं है उनके सामने। हमने तो अपने 4 हाथ पैरों से सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने कितना कुछ किया, वो हमसे बहुत बहुत आगे हैं। थैंक यू अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you, Anita. Now I think Harsha, are you there? Yeah, Poonam is back. So Poonam, yes, tell me something about your arts and something about yourself on this Women's Day. Hi everyone, I am Poonam Chaturvedi. I am based in Dubai. और मैं दुबई में पिछले 17 साल से दुबई में हूँ और मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी 2012 में, जबकि मैं आर्ट बचपन से करती थी, लेकिन आई हैव नेवर टुक इट एज अ प्रोफेशन, आई टुक इट एज अ हॉबी। मुझे लगता था कि पेंटिंग इज जस्ट फॉर टू डेकोरेट योर होम एंड इससे ज्यादा कुछ नहीं होता आर्ट में, मैं बस इतना ही समझती थी। लेकिन जब दुबई में मैं देखती थी कि लोगों को इतना अप्रिशिएट करते हैं आर्ट को, और दुबई में इतना एक्सपोजर है आर्ट को अप्रिशिएट करते हैं। दुबई में एक आपको एक जैसे दूसरे प्रोफेशंस होते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर का प्रोफेशन जैसे होता है, दे टुक इट लाइक आर्टिस्ट एज वेल। मैंने 2012 से स्क्रैच से स्टार्ट किया था, बट मुझे लगता था मैं आर्टिस्ट हूँ, लेकिन मैं दुबई में आने के बाद मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट से मिली एंड बहुत सारे लोगों से बहुत सारी चीजें सीखी। परी सागर उनमें से मेरी एक टीचर भी है, मेरी फ्रेंड भी है। परी इज लाइक यू नो एंजल फॉर मी, और मैंने उनसे भी बहुत सारी बातें सीखी हैं एंड मैंने अपने आप को एक्सप्लोर किया है और सीखा है दुबई में आने के बाद। एंड मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, मेरे बच्चे बड़े जब हो गए, जब व्हेन आई थिंक कि अब वो अपने काम खुद कर सकते हैं, देन आई स्टार्टेड माय करियर। बहुत डर लगता है कि एक सर्टेन एज के बाद आपको लगता है कि आप एक बच्चे की तरह सीख रहे हो, और मुझे लगता है कि कभी भी देर नहीं होती सीखने के लिए। आप किसी भी एज में हैं, आप कभी भी अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, आप किसी भी जर्नी में हो, किसी भी एज में हो तब। सो आई फील अपने आप को एक्सप्रेस करना एक आर्टिस्ट की सबसे बड़ी ताकत होती है। और जैसे मैंने अभी सरस्वती को देखा, आई फील सो इंस्पायर्ड कि जिसके पास हाथ नहीं है तो वो अपने पैरों से कर रही है। दिस इज समथिंग अमेज्ड मी। मुझे लगता है कि जब वो कर सकती है तो हम लोगों को तो ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए कि हम क्या हैं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। आई थिंक शी इज अ इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस ऑन दिस प्लेटफॉर्म। एंड मुझे लगता है कि इट इज रियली 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 इम्पोर्टेंट फॉर अ वुमेन कि अपने आप को एक्सप्रेस करना उनको आना ही चाहिए, एंड इट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर देम। एंड दुबई में आपको जब इतने प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं, जब आपको इतने प्रिविलेजेस मिलते हैं, so why not? And thank you so much for Anil Kejriwal ji for bringing us all together. And thank you. इतना अच्छा प्लेटफॉर्म जब हमें मिलता है ना, तो we will just say कि शायद ये कोई ब्लेसिंग है जो कहीं से तो आ रही है, मतलब women's like us. Thank you so much. Thank you Poonam ji. And Soumya, are you there? Hello. So Harsha or Lavanya, anyone? Yeah, Harasto, yeah, Soumya, yes please. Yes. Hello everyone. Happy International Women's Day. जैसा कि सब लोगों ने इतना सब कुछ बोल दिया है, तो मेरे पास कुछ ज्यादा शब्द नहीं है। आई एम टीचर बाय प्रोफेशन एंड स्पेशल नीड्स बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ, एंड आई एम सेल्फ टॉट आर्टिस्ट। जो कि ऐसा हुआ कि अभी कोविड के टाइम पे मैंने थोड़ा ऐसी पेंटिंग करना शुरू किया था। मतलब पहले भी करती थी, बट इतना ज्यादा नहीं था, अपने प्रोफेशन में बिजी थी।
तो थोड़ा शुरू किया। तो जब मैं पेंटिंग्स मैंने कुछ बनाई थी तो मैंने अपनी फ्रेंड्स को गिफ्ट करी। जैसे हमारे यहाँ कुछ किट्टी होती है तो उनको सबको गिफ्ट करा। तो एक फ्रेंड अपने विला में शिफ्ट हो रही थी, उसने मुझे बोला कि सौम्या कैन यू मेक सम पेंटिंग्स फॉर मी। तो आई टोल्ड कि सी मैंने इतना पेंटिंग्स बनाई नहीं है, आई डोंट नो। तो मैंने एक छोटी पेंटिंग उसको बना के दी एंड शी लाइक। फिर मैंने उसके लिए 5-6 पेंटिंग्स बनाई और उसने अपने विला में लगाई। तो फिर सब फ्रेंड्स ने जितने भी देखा सबने बहुत अप्रिशिएट किया। देन आई केम टू नो कि हाँ आई कैन डू लाइक दिस। तब मैंने और पेंटिंग्स बनानी शुरू करी, एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट किया, तो सबने बहुत अप्रिशिएट किया। देन आई केम टू नो कि हाँ जैसा कि सब लोग बोल रहे हैं कि कुछ भी पैशन होता है एंड व्हेन वी कम टू नो अबाउट इट, तो हम लोग को अपने कंफर्ट जोन से निकल कर वी हैव टू कम आउट एंड अपने क्या बोलना चाहिए कि अपने पंख पसार देने चाहिए। एंड सरस्वती को मैं बोलना चाहूंगी कि शी इज अ इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन एंड हैट्स ऑफ सरस्वती, इट्स वेरी गुड। And thank you, sir, for this platform. This is a blessing for us. Thank you, Soumya. Thanks very much for joining. I think Harsha, are you there? And Lavanya? Hello. I think I think their sound is not coming. So thank you very much for all of joining. And अभी एक मिनट, एक सेकंड। Anyone has left out? एक सेकंड। Yes, please. Yes. अभी हमने सबने लेडीज की बातें की है। मैंने खुद बोला है क्योंकि हम अपने एक जो समाज का वर्ग है, निम्न वर्ग है, वहाँ अभी भी जो है शिक्षा नहीं है, तो बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है जिसकी वजह से मैंने बोला है। लेकिन अब एक लाइन में मैं और कहना चाहूंगी कि पुरुष के बिना भी समाज हमारा अधूरा है। इसमें 4 पंक्तियां बोल के ये खत्म करती हूँ कि नर नारी बने एक इकाई, नर नारी बने एक इकाई, सृष्टि ने इस पर मोहर लगाई, सृष्टि ने इस पर मोहर लगाई, हैं दोनों एक दूजे के पूरक, दोनों स्वामी दोनों सेवक। मतलब समानता का अधिकार पुरुष और नारी को है, दोनों स्वामी दोनों सेवक, समानता का अधिकार यहाँ दोनों के लिए है। बस, thank you. Thank you. Everyone has talked about the working women and all, but no one has talked about the housewives. So their contribution to the home, their contribution to societies cannot be measured, cannot be ignored also. Like no, whenever I go to any meeting, anyone someone asks, "Are your wife is working?" I always say yes. She's working more than me. She's working more than me, but without pay, without any accreditation, without anything. So definitely their contribution to the society, to the home, it cannot be possible. Every successful person needs some support. I am talking to you people since last 1.5 hours. I am working day, nights for the arts and craft and all these things. Why? Because my wife is taking care of that. My daughter is always supporting me for this event. So without them, it cannot be possible. So anyone needs the support, definitely, yes, and the morally, time management and all. So the contribution to this Women's Day is not possible without the contribution of the housewife also. So housewife is not a housewife, actually they are the house managers, and they keep us busy for our works, what I am doing, someone is doing. So definitely their contribution cannot be ignored at all. So thank you very much for all of us. And I think Lavanya or Harsha is not joining here. So thank you very much. Thanks a lot for all of you to coming here. Thank you. Take care and take care of yourself first. If you take care of yourself, then definitely you will take care of your family, take care of your husband, take care of your work. So thank you very much. See you again and again. Thank you very much. Thank you, Sumitra. Thank you. Thank you, Anil. Thank you. Thank you. Bye bye. Thank you.